बीपीसीएलचा नाशिकच्या जमिनींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण ड्रोन पुनर्वनीकरण प्रकल्प सुरू. नाशिक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ही एक अग्रगण्य महारत्न पीएसयू आहे. कंपनीने महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात एक परिवर्तनात्मक पुनर्वसन उपक्रमाची अभिमानाने घोषणा केली. नाशिकच्या वन विभागाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविला जात असून प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सीड बॉल वापरून खराब झालेल्या जमिनी पुनर्संचयित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बीपीसीएलच्या पुनर्वनीकरण प्रकल्पात ड्रोनद्वारे 2 लाख सीड बॉल्सचा वापर केला जाईल. त्याद्वारे दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागांना लक्ष्य केले जाईल. जलद जंगलतोड आणि जमिनीचा ऱ्हास या गंभीर समस्यांमुळे या प्रदेशातील जैवविविधता, हवामान लवचिकता आणि समुदायाच्या कल्याणावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. त्यावर हा उपाय ठरेल. बीपीसीएल मध्ये आमचा नवकल्पना आणि सामुदायिक सामर्थ्यावर विश्वास आहे. नाशिकमधील आमचा ड्रोन आधारित पुनर्वनीकरण प्रकल्प निसर्ग पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि स्थानिक समुदायांना सशक्त बनविण्याच्या दिशेने एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन आणि स्थानिक रहिवाशांना सहभागी करून आमचे एक शाश्वत वातावरण निर्माण करण्याचे ध्येय आहे, जे इकोसिस्टम आणि लोक दोघांनाही फायदेशीर ठरते. आम्ही एक हिरवेगार आणि निरोगी भविष्य घडवू शकतो, असे बीपीसीएलचे कार्यकारी संचालक पाईपलाईन श्री बिजू गोपीनाथ यांनी श्री पंकज गर्ग, उपवनसंरक्षक मिस्टर जलाल शर्मा, जिल्हाधिकारी नाशिक श्री बिजू गोपीनाथ, कार्यकारी संचालक बीपीसीएल पाईपलाईन श्री राजन एम GM CSR बीपीसीएल सांगितले. प्रकल्पामध्ये GIS मॅपिंग वापरून साईट निवड, समुदाय प्रतिबद्धता, सीड बॉल उत्पादन आणि ड्रोनचा वापर यासह सर्वसमावेशक नियोजन यांचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर नाशिक परिक्षेत्र, हिवरे बिल्ग आणि गंगा भाडुंगी गाव या 3 वन परिक्षेत्रांमध्ये लक्षित क्षेत्रे 100 हेक्टर आहेत. हमारा इट्स अ reforestation in inaccessible areas using drones. इस प्रोजेक्ट में हमारा जो उद्देश्य है, ये हम लोग करीब 2 लाख सीड्स हैं जो नासिक के करीब 100 हेक्टेयर ज़मीन पे हम लगाने वाले हैं. बीपीसीएल हमेशा आगे रहा है, जो कुछ वो वातावरण से लेता है उसको देने की कोशिश करता है. अगर देखा जाए हमारे जो मेजर इंस्टॉलेशंस है, डेपोज है, हर जगह हमने मियावाकी फॉरेस्ट लगाए हैं. काफ़ी एनवायरनमेंट की तरफ जो भी हम कर सकते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम है यूजिंग टेक्नोलॉजी विथ द नॉर्मल मोड ऑफ जो सीड्स के थ्रू हम प्लांट करेंगे. जो बर्ड्स जो सीड्स डालते थे नेचुरल वे में, उसको हम ड्रोन से डालेंगे. एंड हमारा जॉब ये सिर्फ सीड डालने से नहीं होता है ख़त्म. हमको इस सीड को मॉनिटर करना पड़ेगा थ्रू ड्रोन्स एंड थ्रू अदर मेथोडोलॉजी, थ्रू सैटेलाइट. एंड हम इसका इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट ये जो जर्मिनेट होते हैं करीब 40-50% इसमें जर्मिनेट होते हैं. बट इनकी सस्टेनेबिलिटी 2-3 साल में जब एक बड़े पेड़ बन जाए और ये वातावरण के जो जिस लक्ष्य से हम लगाएं वो उस पर खरा उतरे, उसके लिए हमको करीब 3 साल वेट करना पड़ता है. तो इसके लिए भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसमें एक पद्धति बनाएंगे और इसको इंश्योर करेंगे कि ये प्लांट प्रोटेक्टेड रहे. हम बहुत आभार हैं द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द CCF and the DCCF and the entire forest department and the administration for giving us the approval for doing this activity. I think एक बहुत बड़ा एक small step है हमारे तरफ से, जो बाकी जगहों पे भी इनफैक्ट बाकी कॉर्पोरेट्स भी एमुलेट करेंगे. मुझे लगता है इसको देख के, हम इसकी सफलता को देख के बाकी कॉर्पोरेट्स भी एमुलेट करेंगे. और एक बहुत बड़ा, अगर इसका जो पायलट है, इसका जो रिजल्ट्स एंटायर कंट्री में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो ये हमारा प्रोजेक्ट का ग्रेट शावर आल्सो. सो इट्स अ गुड बिगिनिंग एज इट्स कंसीडर्ड ऑस्पिशियस एंड इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू address you today as BPCL we are embarking on an initiative which underscores BPCL's unwavering commitment to the environment. As you must be aware, we have taken a big step, and we have taken a vow that by kind of endeavors to make sure that we achieve that by 2040. I think it's a very challenging target, but definitely we have our unwavering commitment towards that, and I'm sure that we are going to achieve that.
Mr. Ma and Mr. Pankaj Garg, thank you for making it to, in spite of this inclement weather. I think it's an honor that you are there with us today. It is my distinct honor and privilege to extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Honorable District Magistrate, Mr. Jalaj Sharma. Mr. Pankaj Garg, Deputy Conservator of Forest West, he will be joining us. He's got delayed. Honorable ED Pipelines, Mr. Biju Gopila. My dear colleagues and all participants, we are honored to have such passionate individuals and organizations here today, all united by a common goal to protect, preserve our environment for future generations. Project Aran seed bombing via drones allows us to access hard-to-reach regions, restoring habitats that were once deemed inaccessible or too challenging to rehab. DFO Pankaj ji, Mr. Gopinath, Mr. Rajan, and all the members of the family of BPCL, the Forest Department, District Administration. First of all, I would like to thank the BPCL team for inviting me to this event to witness how we are now merging technology with addressing the challenges of the environment. After my duty is not only to protect the law and order or the development of the region, but also to make sure that the development is also being balanced by initiatives like this, in which we are also looking forward to neutralize some of the environmental changes that are coming with the development. So in such an initiative, I was very interested to see what activity will be done here today. And as Pankaj told, I'm sure not only today but in the future also this activity will be sustained, and I hope to see very good results, so that there is a lot of opportunity in a big state like Maharashtra with a big forest cover and a lot of areas where such an activity can really show results. If you are able to achieve something good out of this, we are definitely looking forward to do lots and lots of this kind of activities, even from our own district funds. So I would like to give my best wishes to this initiative, and also would like to I would also like to ask BPCL to come forward, as we were already discussing. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.